Welcome to my channel, friends. In the last video I had given the tour of this beautiful resort in Naukochiatal. This is the Heritage Pariche Resort of KMVN. I had shown you the beautiful cottages that they have and other things like the lake view and all, but I could not show you the royal premium rooms, which are the heritage rooms here. Today I'm going to take you on a tour of these rooms, which are the highest category in this resort. So let's go and have a quick look at the premium rooms. So this way goes to the lobby of the heritage building. Let's go inside and check out the lobby. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है. ब्रिटिश आर्किटेक्चर, ब्रिटिश टाइम्स का बना हुआ ये बिल्डिंग, जिसको इन्होंने रिस्टोर किया होगा शायद. तो ये ऊपर सीलिंग है वुडन, और ये रॉ लुक वाले स्टोन वाली वॉल्स हैं, और अंदर थोड़ा डार्क है. लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड. So as we go inside, you can see those stone walls beautifully carved, and these paintings have been put on these walls, and there is this wooden paneling जिसके ऊपर भी paintings हैं. और अंदर और चलते हैं, देखते हैं. तो ये रास्ता अंदर जाता है, एंड यहाँ से स्टेयर्स जा रही हैं लेफ़्ट में ऊपर, जो कि ऊपर रूम्स हैं उनको जाता है. और सामने ये बहुत एंटीक टाइप की विंडोज़ हैं जहाँ से बाहर का व्यू दिखता है. दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो अब हम चलते हैं रूम्स की तरफ. मैं आपको इनके रॉयल प्रीमियम रूम्स दिखाती हूँ. सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट देम. I'm going to show you one of the royal premium rooms now. This one is right in front of the building on the ground floor, the first room. So as you enter the room, you can see that it's very spacious and very well done up. There's a sitting area also. They have put the sofas and all where you can have your dinner and watch TV. There's an antique kind of a cupboard also. Very nice. And this is the view which overlooks the resort lawns and the dining room, etc. And then there you can see a very antique kind of a nice fireplace. So this is like one of those in the British times. This fireplace and these stone walls gives this room a very antique look. Very nice. This is a table they have provided for keeping things. This is a separate dressing area that they've given. Very nice. And what a spacious washroom they have over here. And they've also given a separate bathing area, as you can see over here. This is a separate bathing area, and all the toiletries and tissues, everything has been given. Very nice. Very nice. Very spacious and very comfortable room. These are the heritage rooms. Look at the walls. They are giving such a raw look and very nice and antique look. वो जो सामने आप डोर देख रहे हैं, दरवाज़ा, वो भी कितना अच्छी तरह ब्यूटीफुली कार्व्ड है. बहुत अच्छा डिज़ाइन है. They have given an LED over here and you can sit and watch TV. It's a nice spacious room. और अगर हम इसके टैरिफ की बात करें तो काफ़ी अफोर्डेबल है. This is a private sit out. You can see the reception from here, and this overlooks the lawns and the lake view is there. So all in all, it's a nice heritage property, and the tariff is a little more than the super deluxe wooden cottages. उसकी tariff शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में नहीं बताई थी. That's around 6,300 to 6,500 per night. And this one is 7,000 I think, and this is inclusive of breakfast and dinner. The rest is a la carte. You can order the snacks and lunch. Nice rooms, really good for senior citizens जो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जा सकते. Otherwise the cottages have their own charm. If you haven't seen, please see in my previous videos. They are in midst of nature, so उनका एक अलग ही charm है. This is a video clip of our first night in the resort. It looks so beautiful at night. कुछ video clips रह गए थे जिनको मैं अभी दिखा रही हूँ. And this is the way to the dining hall. Their dining hall is very spacious,
and they serve food which is like home cooked food, and you can even give them instructions like I cannot have spicy food, so they specially served non-spicy food to me. And they also serve one Pahadi dish, like one day it was some Pahadi raita and Pahadi kheer. So their food all in all is very good and quite wholesome and like home cooked. Their service is also very nice. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। और फ्रेंड्स, ये है मिस्टर ललित। आपका पूरा नाम क्या? ललित सिंह बड़ा। ललित सिंह। इन्होंने आप सोच लीजिए कि ये होटल इन्होंने ही संभाला हुआ है। इन्होंने हमको बहुत कंफर्टेबल कराया, डाइनिंग हॉल से लेके रूम में, रूम सर्विस, हर चीज़। कुछ भी खराब हो, जो भी आएंगे वो इनसे ज़रूर मिले। ये है मिस्टर ललित जी फ्रॉम KMVN परिचय। थैंक यू ललित जी। So friends, he is Mr. Naresh Warrior. Mr. Naresh Warrior, the manager at Parichay KMVN, and he's been very helpful. इन्होंने हमारी बहुत comfortable stay करी है। जो भी थोड़ी बहुत problems आई वो उन्होंने सब सॉर्ट आउट की। थैंक यू वेरी मच। हम दोबारा आएंगे, हाँ ज़रूर आएंगे हम अगली बार होपफुली। अब हमको पता चल गया कि मेरे लिए कॉटेज सबके लिए बहुत अच्छे हैं, पर मैं यहाँ रूम हेरिटेज में रुकना अभी वाले रॉयल में ना। हाँ, जो हेरिटेज पुराना है, हेरिटेज ब्रिटिश टाइम का बना हुआ बिल्डिंग है ये। हाँ, वेरी नाइस डे। थैंक यू मिस्टर नरेश वंस अगेन। थैंक यू सो मच। These are the charges of all the rooms, various categories, and they are, ये सारे इंक्लूसिव हैं ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर। दे आर ऑल इंक्लूसिव ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर।